Good morning, all the students. Standard 6th, subject English. Topic verb. In the last video, we covered the explanation of about verbs, and in this video, we will be covering the list of verbs. So, all the students, please open your grammar notebook and write down the list of verbs. Here, you can see that the three parts. You make three parts of verbs like it. जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से आपको थ्री पार्ट करने हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन इन द टाइटल, दैट इज वीक वर्ब्स के नीचे यू राइट डाउन द टाइटल लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल. In the next line, you write main verb, past form or past participle form. First one is awake. Its past form is awoke and past participle form is awoken. Then second, bear, bore, born. Then third one, बिगिन, बिगन, बिगन. यहाँ पे क्या केयर लेनी है? बिगन का स्पेलिंग है पास्ट फॉर्म में BEGAN एंड द पास्ट पार्टिसिपल में है BEGUN. दैट ऑल. राइट डाउन केयरफुली. देन फोर्थ इज बाइंड, बाउंड, बाउंड. एंड फिफ्थ ब्रैक, brock, broken. Then sixth, crow, crew, crowed. Then seventh, dig, dug, dug. Then eight, draw, drew, drawn. And the ninth one, drink, drunk, drunk. Here spelling is changed. Past form drunk is DRANK and the past participle drunk DRUNK. Then tenth, it, at, eaten. Then 11th, find, found, found. Then 12th, forget, forgot, forgotten. Then 13, get, got, got. Then 14, hide, hid, hidden. Then 15, know, knew, known. Then 16, run, run, run. Then 17, see, show, seen. Then 18, sing, sung, sung. Here also the spelling is changed. Sung, past form is SANG and the past participle is SUNG. V3. Then 19, sit, sat, sat. Then 20, spring, sprung, sprung. Pronunciation is same but spelling is different. That is past form is sprung, SPRANG, and the past participle is SPRUNG. Then 21, string, strung, strung. 22, tech, took, taken. 23, where, wore, worn. Wore, WORE, and worn, WORN. Then 24, win, won, won. And the last one, 25, is write, wrought, written. Here it is all the strong verbs. The end is EDD or T. Then you write down the title is the list of weak verbs. That is also
It have three forms, that is present, past and past participle, V1, V2 or V3. You write down. First verb is bind, bent, bent. Then second, build, built, built. Then third, bring, brought, brought. Then fourth, buy, bought, bought. Fifth, catch, catch, catch. Then sixth, deal, dealt, dealt. स्पेलिंग आप यहाँ से देख के केयरफुली लिखना है, पूरे सही ही स्पेलिंग लिखने चाहिए. देन सेवन्थ वन, फील, फेल्ट, फेल्ट. देन एट्थ, हंग, हंग्ड, ईडी का रूप है और ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल हंग्ड. देन नाइन्थ, कीप, kept, kept. Then 10th, land, lent, lent. Then 11th, light, lit, lit. Then 12th, pay, paid, paid. Then 13th, sell, sold, sold. 14th, prove, proved, proved. Then 15th, shoot, shoot, shoot. यहाँ पे SHOOT, that is main form, V1. पास्ट में SHOT है ओनली, एंड द पास्ट पार्टिसिपल में भी SHOT. देन द 16, स्पीड, स्पीड, स्पीडी, स्पीडेड, सॉरी. देन 17, स्वेल, स्वेल्ड, स्वॉलन. देन टीच, टॉच, टॉच. एंड 19, टेल, टोल्ड, टोल्ड. एंड वेट, वेटेड, वेप्ट. It's all the list of weak verbs. And then now the third title, you write down the list of some verbs. Some verbs में क्या है कि ऐसे ही three forms इसी तरीके से पहचाने जाते हैं, same forms. The simple past tense or some irregular verbs does not change. Some past tense में जो वर्ब होते हैं वो, और इरेग्युलर वर्ब्स कई ऐसे वर्ब हैं जो चेंज नहीं होते हैं. उसी तरीके से जो मेन वर्ब है इसी प्रकार से लिखे जाते हैं. वो कौन कौन से वर्ड है? यू ऑल हैव राइट डाउन. फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, बैट, बैट, बैट. फर्स्ट present tense is bat, past tense is bat, or past participle is also bat. Then second, brushed, brushed, brushed. Then third, cast, cast, cast. Then fourth, coast, coast, coast. Fifth, hit, hit, hit. Then sixth, cut, cut, cut. Eighth, let, let, let. ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते इन three forms. Then 10th, read, read, read. Write, write, write. Set, set, set. Seed, seed, seed. Shoot, shoot, shoot. Spilt, spilt, spilt. Spread, spread, spread. Or thrust, thrust, thrust. These all forms have no change. It is past form or irregular forms. So all the students carefully note down in your notebook, as it is 3 पार्ट में डिवाइडेड करके लिख लेना है और केयरफुली लर्न कर लेना है ताकि हम पास्ट टेंस को इजीली समझ सकें. इन द नेक्स्ट वीडियो we will be covering the tense that is simple past tense. अच्छी तरीके से इस टॉपिक को नोटबुक में लिख के समझ लेना है. थैंक यू.